Hello everyone, welcome back with new video on Java programming. In this video, we are going to see what is method in Java. So let's first understand what is the method. So you can see on the screen, method are used to encapsulate a block of code that perform a specific task. They allow for a code reusability. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि method means execution of a block of for the performing any task. Okay. The methods allow the code reusability, that is we can use the method more than one times. So अगर हमें जावा में कोई भी कोड रिपीटेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, उसमें वो कोड ऐड करेंगे जो भी हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उस मेथड को क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेथड declaration. Here you can see on the screen. For the method declaration, first we need the access specifier. We already seen the types of access specifier or access modifier in our old videos. So if anyone having any doubt regarding the point, you can check out the access specifier video. Then second argument is, or second is return type. We see the data types in Java. Same method having some return type or may not. So the return types are of type string, integer, then list. So if method doesn't having any data type, then we declare return type as void. And if method having any return type, for example, I want to return a person name from the method, but person name we stored as a string, so return type is string. If someone want to perform addition operation and returning some value, that is addition is of integer type, then we should return the integer, that is return type is integer. And method name, as हम जब क्लास डिक्लेयर करते हैं तब हम पास्कल केस यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इनिशियल ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल. लाइक दैट हम जब मेथड डिक्लेयर करते हैं तब हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट इनिशियल स्मॉल, अदर दैन द फर्स्ट इनिशियल ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटल. You can see in the syntax. And then parameter list. Method are of two type, that is no argument and argument. We'll see then the body of the method, that is हम जो कोड रिपीट करना चाहते हैं वो कोड हम जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे कि हमने देखा टाइप्स ऑफ वेरिएबल में लोकल वेरिएबल्स, दैट इज द मेथड वेरिएबल्स, और वी कैन डिक्लेयर एज अ आर्गुमेंट और that is parameters, or inside the body, that is local variables. Then the code which we want to repeat again and again, and then the रिटर्न स्टेटमेंट. यहाँ पर मैंने क्यों ऑप्शनल लिखा है, क्योंकि जब भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा तब हम void लिखेंगे, मीन्स वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है और हम नहीं लिखते. इफ I have given the return type as string, then I should or I must have some returning value, so we needed to write their return statement. Okay, this is a declaration of method. Let's see with the example. For that, start STS and create one Java project by click on files, new, and then Java project. Give method name for the project, that is methods. Click on finish. Expand the project and create one Java file inside the source folder. Right click on source and create new Java class with name methods. Check the main method, it will automatically created. Then यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेन मेथड है. मेन इज वन टाइप ऑफ मेथड, ओके, दैट इज स्टैटिक मेथड which doesn't need any instance for calling, so it will run automatically when we call the class as a initial. Okay, then हम क्या करेंगे, एक मेथड डिक्लेयर करेंगे. फॉर दैट हमने जहाँ पर सिंटेक्स में देखा, वी नीड एक्सेस स्पेसिफाई फर्स्ट. आई एम डिक्लेयरिंग एज अ पब्लिक, then means I can access within the class, within the file, or within the package. Okay, then public. For return type, I am taking the void, means no return statement. We'll see one example with return type void, and then print message in camel case. Okay, give the opening and closing parenthesis and enter, then opening and closing curly brackets for the method's body. Okay, then I just want to print a message every time, that is hello world or
hello only. For that, first I need to write the SOP statement. Then in that hello, and dynamically I'm one thing, I'm just taking the value from user, that is name. Okay, any person's name, that is hello xyz, hello abc, like that. For that I need the scanner class object. Okay, you already see the how to take input from the user in our old videos. Anyone doesn't watch it, so you can watch in parenthesis system.in. Use the semicolon, import the scanner class L, then enter. फॉर द ऑटोमेटिक क्रिएशन, दैट इज हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना टाइप करना, न्यू स्कैनर दिस वन, एंड जस्ट एंडिंग of the parenthesis you can press alt shift L and then write the object name for you want to give the class objects and then press enter. Then यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम यूजर से लेंगे, that is string name is equals to object dot, for the string we have the next or next line method, use that and just print our name here, that is hello and name. For exclamatory mark just add and this just give the exclamatory mark, that is hello name and then exclamatory mark. This is a declaration of method, then this is a body of method, and just our next, यहाँ पर आप देख सकते हैं next is method invocation or calling. How to call method, that is method name and then argument list. If method doesn't have any argument, so just call with the blank parenthesis. Okay, and जैसे कि मैंने कहा कि रिटर्न टाइप जब हम void लिखते हैं तब हमें रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं होती है. ओके, दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है जब हम मेथड को रिटर्न टाइप देते हैं, दैट इज सम स्ट्रिंग इंटीजर एक्सेट्रा, देन we need to write the return statement. We'll see one return type as well. So first, for the calling of function, that we write the print message. For the calling of the function, we needed to create the instance of the class first. Okay, so within the main method, just create the object of the class, that is methods. Okay, then okay, हमारी मेथड मेथड्स क्लास में है, इसलिए हमने क्या किया, मेथड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. देन बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मेथड क्लास, okay, we'll call the dot, we'll call the our method, that is print message. Here you can see. Okay, just click on it and then save it. So you can see here how to call the method. This is a method calling, so I just give the single line command, that is method calling. This one is a method declaration, just giving the comment. We already see the types of comment in Java in our older videos. So this is a method declaration and this is a method calling. For the result, just run the project, right click on the project, run as Java application. So here on the console there is no output. Okay, for that यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने क्या किया है, directly इनपुट दिया है. फॉर दैट हियर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नेम पास करना पड़ेगा, दैट इज हेलो, हमने पास किया जावा. सो एंटर. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो जावा प्रिंट हुआ है. बट अब हमने देखा कि कंसोल ब्लैंक आ रहा था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज देना पड़ेगा यूजर को अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, फॉर दैट राइट SOP स्टेटमेंट, दैट इज एंड गिव द वन मैसेज, एंटर योर नेम, like that, and save the file and rerun it. Here आप देख सकते हैं, write your name, that is Java code, and just press enter. Here you can see our result, that is hello Java code and exclamatory mark. This is a calling of method. If I want to print it again with a different name, then I just call this method again. Wherever I want to call, I can call the method, that is use the method outside the class, within the class. Okay, just rerun it, then just enter your name, that is
जावा एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो जावा। यहाँ पर मैंने फिर से मेथड कॉल किया है, इसलिए अगेन एंटर योर नेम दैट इज हेलो, गिव द वर्ड एज इनपुट, देन अगेन प्रेस एंटर, हेलो वर्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कितनी बार भी वो मेथड दैट इज वो ब्लॉक ऑफ कोड यूज कर सकते हैं। हमने एक ही बार सिर्फ वो डिक्लेयर किया और जब भी हमें नीड हो तब हम उसको कॉल कर सकते हैं। दिस इज अ मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड कॉलिंग। हमने यहाँ पर क्या किया है, रिटर्न टाइप वॉइड दिया था। अगर हमें मेथड को रिटर्न टाइप देना पड़ेगा तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। यहाँ पर मेथड विथ रिटर्न टाइप, मैं क्या करूँगी, एक मेथड डिक्लेयर करूँगी पब्लिक। यहाँ पर क्या करती हूँ, एक इंटीजर रिटर्न करती हूँ एंड ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ यूजिंग द मेथड। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेम यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो वो मैं करूँगी मैं क्लास में डिक्लेयर करूँगी ताकि मैं से यूज कर सकती हूँ इनसाइड द क्लास। देन यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, रिटर्न टाइप इंटीजर दिया है। सो जैसे कि मैंने कहा था, हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। रिटर्न जस्ट गिविंग द 0 फॉर static value is gone. Okay, then we'll just take the two numbers from user. For that, giving the message, then print enter two numbers for addition. For that, okay, we need two variables to take two numbers from user, that is num1 is equals to scanner class object dot, for integer we have next int method, then again in integer number 2, again the same scanner class object dot, we have the next int for the storing integer value. Then just have third variable result to store the addition of num1 plus num2, just return the result। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया था, रिटर्न टाइप इंटीजर लिया था और मैं रिजल्ट रिटर्न कर रही हूँ विच इज ऑल्सो इंटीजर टाइप। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सेम मेथड्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ऑलरेडी, तो मैं क्या करूँगी, वो यूज करूँगी एंड हमारी सेकंड मेथड कौन सी है, ऐड। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड कॉल करूँगी। फॉर दैट we have the return type as integer, so we'll store the result or directly print using the SOP statement, that is the call inside the SOP statement। Okay, remove the extra and then just give the message that is addition, then clear the console and then rerun the project। यहाँ पर first method is print message, so for that give the name that is hello java। यहाँ पर नेक्स्ट मेथड कॉल हुई जो भी हमारी एडिशन की है वो। फॉर दैट हमने क्या मैसेज दिया था, एंटर टू नंबर, सो एंटर फर्स्ट नंबर एज 45 and our next number is 5। okay, enter here, you can see the addition is 50। okay, here आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रिजल्ट प्रिंट करने के लिए कोई भी एसओपी नहीं दिया है। हमने क्या किया है, रिटर्न टाइप दिया है, सो इट इज रिटर्निंग द रिजल्ट। दिस इज अ रिटर्न टाइप that is void and whatever int, string, we can give any data type as a return type। then the next thing inside the method is no argument method। यहाँ पर हमने देखा these method are having no any argument। okay, यहाँ पर blank है inside the parenthesis, that is called as no argument method। so this is an example of no argument method। I'm just giving again the comment that is no argument method। we see that we'll see that
हमने यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते वो भी देखा था. सो आई एम जस्ट गिविंग द मल्टी लाइन कमेंट. And so this is, as I told, no argument method. I'm just explaining it. That is method with no parameter called as no argument. अब हमने देखा already. The next one is parameterized method. यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर की है जैसे कि हमने ऑलरेडी किया है. सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पैरामीटर्स दैट इज मेथड को कुछ पैरामीटर पास किया है. ओके, just see with the example 1, parameterize method. Give comment, that is parameterize method. For that, declaring one method is public. I am giving the return type as string and then मैं मेथड का नाम डिक्लेयर करूंगी, that is print name. In this example, I am just taking one parameter from the user, that is person name, and returning the name whatever user has passed. Okay, string name. यहाँ पर return type string है, so we needed to add the return statement, that is return and name. जैसे कि हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेरिएबल में देखा था, दिस इज अ लोकल टाइप ऑफ वेरिएबल. ओके, विच वेरिएबल वी declare the inside the method and as a parameter they are the local variables. हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक मेथड डिक्लेयर की है. उसमें क्या किया है, यूजर से एक पर्सन का नेम लिया है और वो रिटर्न किया है. दिस इज पैरामीटराइज्ड मेथड. वी कैन ऐड multiple, that is n number of parameter within the method. Then for the calling of the parameterized method, okay, same, we need class instance which we already declared. We can use this, okay, by using that object methods dot. Here you can see after that print name, and in this parenthesis we have one parameter, so we needed to pass that. Here it is null, but okay, we can pass in the double quotes, that is I just give the ram. Okay, save the file and again print using the SOP, that is add the message, that is parameterized method. Save the file. Just add the concatenation operator. Save the file, clear the console and rerun the project. Here first call is a print message, that is hello world. Here our output is hello world. Then the addition call, that is first number is 45, second one is 6, addition is 51. Here parameterized method is called, that is return only name. यहाँ पर हमने क्या किया था, यूजर से इनपुट लिया था. यहाँ पर भी हम वैसे कर सकते हैं. यहाँ पर अगर मैंने राम पास किया और अगेन यहाँ पर क्या स्टोर करेगा, राम स्टोर करेगा. बट within the method I am taking, that is updating the name value by taking the input from user using the scanner class, so it will override the value. We'll see our override concept in our upcoming videos. So this is the calling of parameterized method. So I hope you guys you understand what is method, what is the use of method, how to declare it and how to call it.